So hello students and once again welcome back to my channel, and today we are going to discuss a chapter of class 8 ncert science, and this is our chapter 3, okay, of ncert. Are you able to see properly? Are you able to see properly or not? Hello students, are you able to see properly or not? Okay. So let's start the chapter. Okay. So the chapter is all about fibers and plastic. Okay. So first of all, the clothes which we wear are made of fabrics. Okay. Here, the clothes which we wear are made of fabrics. Okay. जो हम लोग कपड़े पहनते हैं वो किसके बने होते हैं? फैब्रिक्स के बने होते हैं. And fabrics are made from fiber. And fabrics are made from fiber. और जो हमारा जो फाइबर है वो दो तरह से ऑब्टेन होता है. ओके. पहला तो है नेचुरल सोर्स. दूसरा है आर्टिफिशियल सोर्स. ओके. ये दो तरह के फैब्रिक होते हैं. ओके. सो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग को फाइबर के बारे में बात करना है. लेकिन कौन सा फाइबर? आर्टिफिशियल फाइबर. और आर्टिफिशियल फाइबर को क्या ही बोलते हैं? क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल को सिंथेटिक या फिर मैन मेड फाइबर भी बोलते. ओके. आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ फाइबर को सिंथेटिक फाइबर या मैन मेड फाइबर भी बोलते हैं. आर यू एबल टू से इट क्लियरली? ओके. सो प्लीज नोट इट डाउन इन योर नोटबुक. सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े कि क्लोथ्स जो हम पहनते हैं वो किसके बने होते हैं? वो फैब्रिक्स के बने होते हैं. और फैब्रिक्स किसके बना होता है? तो वो फाइबर से बना होता है. और फाइबर के दो सोर्स होते हैं. पहला होता है नेचुरल सोर्स, दूसरा होता है आर्टिफिशियल सोर्स. और नेचुरल सोर्स से जो फाइबर पाए जाते हैं उसको सिंथेटिक या फिर मैनमेड फाइबर भी बोलते हैं. अब ये जो सिंथेटिक फाइबर है क्या आखिर? ओके. ये सिंथेटिक फाइबर है क्या? सिंथेटिक फाइबर के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं. तो इसमें आप लिख लीजिए द फाइबर्स which are made by humans
ह्यूमन बीइंग लिख लीजिए, ओके। ह्यूमन बीइंग आर called synthetic fiber, ओके। जो फाइबर ह्यूमंस द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं, ओके। वेट जस्ट अ सेकेंड स्टूडेंट, ब्राइटनेस थोड़ा कम। Are you able to see now clearly? Okay. So मैंने आपको क्या पढ़ाया? सिंथेटिक फाइबर किसको बोलते हैं? The fiber which are made by human beings are called synthetic fiber. For example, you can say rayon, nylon, polyester. Okay, these are the names. These are the name, etc. So these are the names of some of the synthetic fibers. Now, so these names you are seeing the first time, so you will be not heard of these names. तो इसी चैप्टर में हम लोग इन सब के बारे में, रेयॉन, नाइलॉन क्या होता है, पॉलिएस्टर क्या होता है, सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो अब एक पॉइंट लिख लीजिए, ये सिंथेटिक फाइबर कैसा होता है? तो लिखिए सिंथेटिक फाइबर आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, ओके, नॉन बायोडिग्रेडेबल, comma, easy to maintain, long lasting, तो सिंथेटिक फाइबर कैसा होता है? वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, इसका मतलब वो मिट्टी के साथ मिक्स नहीं होता है। देन इजी टू मेंटेन, उसमें ज़्यादा उसका मेंटेनेंस में खर्चा नहीं है, और वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। एंड द important point about synthetic fibers are they are less expensive. These are the some characteristics or the advantages of synthetic fibers. Now we will discuss about the types of synthetic fiber, okay. सिंथेटिक फाइबर तो आपको पता है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है, द फाइबर्स विच आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स, एग्जाम्पल लिख दिया। नाउ सिंथेटिक फाइबर्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, इजी टू मेंटेन, लॉन्ग लास्टिंग, लेस एक्सपेंसिव। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। तो पहला नाम आता है हमारा, दैट इज रेयॉन,
you are very much familiar to this name, rayon silk. Okay, सिल्क उसको क्यों बोला जाता है मैं आपको बताऊंगा अभी, वेट जस्ट अ सेकंड। तो आप इसको स्टेटमेंट लिख लीजिए, एक मतलब डेफिनेशन कि रेयन सिल्क आखिर होता क्या है। तो रेयन हैज अ सिल्की टेक्सचर। इज इट विजिबल टू यू क्लियरली? वो देख रहा अच्छे से? इसका सिल्की टेक्सचर होता है और एंड is made from cellulose। इसको आप नोटबुक में नोट डाउन करते रहिए। ओके, सो दैट आपका छूटे ना, क्योंकि इसका पीडीएफ आपको दे पाना मुश्किल है। तो आप इसको मेरे साथ नोट डाउन करते जाइए। ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड पल्प, तो ये कहाँ से ऑब्टेन होता है? वुड पल्प, जो जैसे कोई पेड़ होता है उसका जो ऊपरी परत हो ना, ऊपरी परत, उसी को वुड पल्प बोलते हैं। ओके, जो वुड पल्प से जो सेल्यूलोज आता है, जो ऑब्टेन होता है, उसको बोलते हैं रेयन सिल्क। उसको सिल्क क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो है सिल्की टेक्सचर होता है। ओके, इसका जो है सिल्की टेक्सचर होता है, इसलिए इसको रेयन सिल्क भी कहते हैं। तो ये कैसे बनता है वुड पल्प से, अब ये लिख सकते। तो क्या होता है? दी ओरिजिनल raw material सेल्यूलोज, क्योंकि हमको तो वुड पल्प से सेल्यूलोज मिला। ओके, फिर सेल्यूलोज को, जो रॉ मटेरियल सेल्यूलोज है, तब इसको क्या करते हैं हम लोग? ब्रोकन डाउन करते हैं। इस ब्रोकन डाउन केमिकल रिएक्शंस करके इसको तोड़ते हैं। ओके, इसको तोड़ते हैं, और ये आपका एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 है। ओके, और आप इसको नोट डाउन करते जाइए, सो दैट एक भी पॉइंट आपका नहीं छूटे, क्योंकि ये जो है ना चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। broken down and then reformed in lustrous in the lustrous fiber। lustrous मतलब चमकदार। ओके, लस्टरस का यहाँ मीनिंग लिख लीजिए आप। कहाँ लिख दिया आपका लस्टरस का मीनिंग? इधर लिख लीजिए आप लोग। ओके, इसका मतलब होता है चमकदार। ओके, चमकदार। lustrous fiber called रेयन। तो रेयन एक कैसा है फाइबर? लस्चरस फाइबर है, और लस्चरस प्रॉपर्टी जो है रेयन का, वही उसको रेयन सिल्क कहने पर मजबूर करती है।
जो कि वो सिल्क की तरह लस्चरस है। दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेयन सिल्क। अब रेयन was the first synthetic fiber formed from natural raw material। ओके, तो ये हो गया रेयन सिल्क के बारे में। इसके बाद हम लोग इसके रेयन सिल्क के प्रॉपर्टीज और यूजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जितना मैंने लिखा है इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, तब तक मैं इसे समझा देता हूँ। तो सबसे पहले रेयन जो है उसका टेक्सचर कैसा होता है, सिल्की सिल्की होता है, इसीलिए इसको रेयन सिल्क भी बोलते हैं। ओके, रेयन सिल्क इसको क्यों बोलते हैं, रेयन सिल्क इसका नाम क्यों है, क्योंकि उसका सिल्की टेक्सचर होता है। देन in and is made from cellulose obtained from wood pulp। और ये किससे बनता है, सेल्यूलोज से। और सेल्यूलोज किससे ऑब्टेन होता है, वुड पल्प। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, सो दैट आप इसके नोट्स को जब रिवाइज करेंगे तो आपको सब इंपॉर्टेंट पॉइंट पता होंगे कि कहाँ से क्या होता है। तो फर्स्टली रेयन का सिल्की टेक्सचर होता है। ये किससे बनता है, सेल्यूलोज से बनता है। और ये सेल्यूलोज ऑब्टेन्ड कहाँ से होता है, वुड पल्प से। The original raw material cellulose is broken down and then reformed in the lustrous fiber। lustrous का मैंने मीनिंग बताया था यहाँ पर, चमकदार। ओके, lustrous fiber called rayon। फिर से यहाँ रेयन का नाम, रेयन वॉज द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर। तो ये पहला ऐसा रेयन है सिल्क सिंथेटिक फाइबर जो कि नेचुरल रॉ मटेरियल से बना है। लेकिन ये क्या है, एक सिंथेटिक फाइबर है, बना नेचुरल रॉ मटेरियल से, लेकिन ये क्या है, एक सिंथेटिक फाइबर है। होप दैट आपको इतना समझ में आया होगा। फिर से आपको रिवाइज करा देते हैं। तो पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो क्लॉथ होते हैं ये किससे बनते हैं, फैब्रिक से बनते हैं। और फैब्रिक किससे बनता है, फाइबर के चेन से। और फाइबर दो तरह के होते हैं, पहला जो नेचुरल सोर्स है और आर्टिफिशियल सोर्स से जो फाइबर बनता है उसको सिंथेटिक या फिर मैन मेड फाइबर बोलते हैं। फिर आपको यहाँ पर सिंथेटिक फाइबर का डेफिनेशन आपको दिया गया, द फाइबर्स विच आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। फिर यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल्स बताया जिसमें पहला रेयन है जिसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस किए। देन यहाँ पर आपको मैंने सिंथेटिक फाइबर का प्रॉपर्टी बताया कि सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, इजी टू मेंटेन, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और कम लेस एक्सपेंसिव होते हैं। ओके, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये ही है। फिर मैंने आपको टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर का पहला जो रेयन सिल्क उसके बारे में बताया। अब उसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, तो इसको जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लीजिए। रेयन सिल्क वाला हम मुझे लगता है कि आपने नोट डाउन नहीं किया होगा अभी तक। ओके, 5 मिनट देता हूँ, जल्दी से नोट डाउन कर लेंगे क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है और कवर करना है बहुत चीज़। ओके,
आई होप दैट आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो आप वीडियो के थोड़ा पीछे जाइए और जाके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, सो मैं रफ करने जा रहा हूँ इसको। ओके, तो अब हम लोग रेयॉन सिल्क के प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ओके, ओके, बात कर रहे थे हम लोग रेयॉन सिल्क के बारे में। ओके, तो इसके सबसे पहले क्या देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज। सबसे पहला पॉइंट, ओके, तो प्रॉपर्टीज का पहला पॉइंट आप लोग लिखिए। पहला, ये सबसे पहला सिंथेटिक फाइबर है। दूसरा पॉइंट लिखिए, ये क्या है, करता है, absorbs moisture because blended with कॉटन। ओके, ये सबसे पहला इसका प्रॉपर्टी क्या है, पहला तो ये एक सिंथेटिक फाइबर है। दूसरा कि ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है। क्यों एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि ये किससे ब्लेंडेड है, कॉटन से। अब इसके यूजेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ओके,
पहला पॉइंट लिखिए आप। तो ये किसमें यूज होता है? सो इट इज यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इट इज यूज in textile industry for making fabrics. Okay, which are, देखिए ये आर है। ओके, आपको इरेज कर देता हूँ, यहाँ आर है। which are blended with cotton or silk to make smooth and silky clothes. अब आपको ये थोड़ा अच्छे से दिख रहा होगा। तो इट इज यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर मेकिंग फैब्रिक्स विच आर ब्लेंडेड विथ कॉटन और सिल्क टू मेक स्मूथ एंड सिल्की क्लोथ्स। ओके, तो ये बेसिकली टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। और फैब्रिक्स किसके साथ ब्लेंड होके बनाते हैं? कॉटन या फिर सिल्क, टू मेक स्मूथ एंड सिल्की क्लोथ्स। ओके, फॉर used for making reinforced टायर। ओके, ये reinforced टायर मतलब ये टायर बनाने में भी काम आते हैं। और किस चीज में? फॉर मेकिंग बैंडेजेस, फॉर मेकिंग बैंडेजेस। और किस में काम आता है? सर्जिकल ड्रेसिंग्स, सॉरी, एंड सर्जिकल ड्रेसिंग्स। एक और पॉइंट लिख लीजिए, ये लास्ट पॉइंट है। इट इज blended with wool। ये सब नोट्स को आपने कॉपी में एकदम अच्छे से लिखिएगा, क्योंकि आपको एग्ज़ाम के टाइम में ये बहुत ही काम आएगा। क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में बहुत कम टाइम मिलता है और कम टाइम में रिवीजन तो होगा नहीं, वो भी पूरे चैप्टर का। तो ये नोट्स से आप रिवीजन कर सकते हैं। ओके, you can revise the full chapter with this notes
क्योंकि इसमें जो नोट्स है ना वो बहुत बेसिक होता है, बहुत बेसिक। वो चैप्टर का एकदम निचोड़ होता है। अगर आप इन नोट्स को पढ़ते रहे ना तो आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो। ओके, सो सबसे पहले इसका प्रॉपर्टीज फिर से डिस्कस कर लेते हैं। पहला, ये क्या है? फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर है। ये एक फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर है। आप नोट्स को लिखते जाइए, मैं इसको समझाता, अभी समझा रहा हूँ, अब इसको लिखिए। absorbs moisture because it is blended with cotton। ये क्या है? रेयन सिल्क कॉटन से ब्लेंडेड होता है। ओके, रेयन सिल्क कारपेट बनाने में भी यूज होता है, बैंडेजेस और सर्जिकल ड्रेसिंग्स बनाने में भी यूज होते हैं, और रेनफोर्स्ड टायर्स बनाने में भी यूज किया जाता है। इट इज ब्लेंडेड विथ कॉटन और सिल्क टू मेक स्मूथ एंड सिल्की क्लोथ्स। ये कॉटन और सिल्क के साथ ब्लेंड किए जाते हैं टू मेक सिल्की क्लोथ्स। नाउ प्लीज note it down, and then we will discuss about the next synthetic fiber, that is nylon. Okay, okay, hope that you have noted all the things I've written on this board. Now let's erase it and learn about new synthetic fiber, and the second one, that is nylon. Okay, अब हम लोग नायलॉन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल let me clean this board. Okay, so now we are talking about the second synthetic fiber, that is nylon. Okay, नायलॉन के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। नायलॉन के बारे में आपको मैं एक फन फैक्ट भी बताने वाला हूँ। ओके, तो उसके लिए पहले हम लोग सिंथेटिक फाइबर नायलॉन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसके यूजेस के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर मैं आपको नायलॉन का फन फैक्ट बताऊंगा। ओके, तो यहाँ लिखिए, नायलॉन is a superior synthetic fiber. Is it visible to you? Superior synthetic fiber. Okay, nylon is a superior synthetic fiber सॉरी, यहाँ सिंथेटिक फाइबर नहीं होगा, यहाँ होगा सिंथेटिक पॉली
polyamide fiber. Okay, the nylon fibers are elastic, strong, and water resistant. ओके, तो नाइलॉन एक सुपीरियर सिंथेटिक पॉलीअमाइड फाइबर है एंड नाइलॉन फाइबर्स आर इलास्टिक, स्ट्रॉन्ग एंड वाटर रेजिस्टेंस. ये कैसे होते हैं? These are elastic, strong, and water resistant. Now let's talk about their properties. Okay, properties के बारे में अब अच्छे से डिस्कस करेंगे. ओके, तो यहाँ पॉइंट लिखिए. सबसे पहला पॉइंट, nylon fibers are elastic, जो कि मैंने आपको इसके डेफिनेशन में भी बताया है. देन यू राइट नाइलॉन फाइबर्स आर स्ट्रॉन्ग, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं. देन नेक्स्ट पॉइंट यू राइट दे आर वाटर रेजिस्टेंट, water resistant. Okay, next point you write they are wrinkle resistant. Okay, they are elastic, strong, water resistant and wrinkle resistant. ये तो था उसके प्रॉपर्टीज के बारे में कि वो कैसा होता है. इलास्टिक होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, वाटर रेजिस्टेंट होता है, रिंकल रेजिस्टेंट होता है. रिंकल रेजिस्टेंट मतलब उसको आयरन नहीं भी करेंगे तो चलेगा. ओके, देन let's talk about the uses. Then we will talk about the fun fact about this nylon fiber, synthetic fiber. First of all, make a dot and write point. First of all, its uses are, it is used for manufacture of tire coats, fabrics, and ropes. आप लिखते जाइए मेरे साथ. इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग फिशिंग नेट्स. फिशिंग नेट्स बनाने में काम आते हैं. देन एंड यहाँ लिख लीजिए, एंड इसी में डाल देते हैं एक और पॉइंट, it and parachute
एस नहीं होगा, पैराशूट का स्पेलिंग होता है PARACHUTE, पैराशूट रोप्स, पैराशूट के रोप्स बनाने में काम आते हैं. देन it is used for making bristles for brushes. Then it is used for making of saris, socks, neckties. ओके, इन सब का थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग फन फैक्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे. ओके, फन फैक्ट के भी बारे में डिस्कस करेंगे. अभी पहले सबके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. पहला यूजेस, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग टायर कोट्स. टायर कोट्स बनाने में यूज होता है, फैब्रिक्स बनाने में यूज होता है, रोप्स बनाने में, या रस्सी बनाने में यूज होता है, फॉर फिशिंग नेट्स बनाने में यूज होता है, पैराशूट रोप्स बनाने में यूज होता है. फिर ब्रिसल्स, जो आपके ब्रश के ब्रिसल्स है वो भी नायलॉन से बनते हैं. फिर इससे साड़ीज, सॉक्स, नेक टाइज बनाए जाते हैं. ओके, नाउ a fun fact about nylon which I gonna tell you is that so firstly ये इसको किसने खोजा उसका नाम लिख लेते हैं. It was discovered by Wallace Carothers. Wallace Carothers, and in 1935. Now, the fun fact is the name nylon was derived from New York. ओके, न्यूयॉर्क NY. जो नायलॉन का NY है वो डिराइव्ड कहाँ से हुआ है, न्यूयॉर्क से. एंड लंदन, जो उसका LON है, LON, वो डिराइव्ड है लंदन से. बिकॉज इसका एक रीजन भी लिख लीजिए, एज इट was produced
in New York and in London at the same time. At the same time. ओके जो नाइलॉन वर्ड है वो न्यूयॉर्क और लंदन से मिलके बना है. NY जो कि न्यूयॉर्क से डिराइव्ड है और LON जो कि लंदन से डिराइव्ड है. तो फिर से मैं एक बार नाइलॉन को रिपीट कर देता जो कि मैंने आपको पढ़ाया. सो नाइलॉन इज अ सुपीरियर सिंथेटिक पॉलीअमाइड फाइबर. ये क्या है? एक पॉलीअमाइड फाइबर है. और नाइलॉन के फाइबर कैसे होते हैं? दे आर इलास्टिक, स्ट्रॉन्ग एंड वाटर रेजिस्टेंट. इनके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? नाइलॉन फाइबर्स आर इलास्टिक, दैट they can be stretched, strong, and they are water and wrinkle resistant. Okay, so these are the properties and uses. It is used for manufacture of tire coats, fabrics, and ropes. It is used for making fishing nets and parachute ropes, and it is used for making bristles for brushes. It is used for making saris, socks, and neckties. And the fun fact is that the nylon was discovered by Wallace Cathars in 1935, and the name nylon was derived from New York and London. मतलब कि जो नायलॉन है उसको किसने डिस्कवर किया? तो वो थे वैलेस कैरोथर्स इन 1935. एंड जो नेम है नाइलॉन वो न्यूयॉर्क और लंदन से डिराइव्ड है. NY जो है नाइलॉन में वो न्यूयॉर्क से डिराइव्ड है और जो LON है वो लंदन से डिराइव्ड है. क्यों डिराइव है? क्योंकि इट वॉज प्रोड्यूस्ड इन न्यूयॉर्क एंड लंदन एट द सेम टाइम. ओके, so this is all about the synthetic fiber nylon. Let's talk about the third one of the synthetic fiber, that is polyesters. Okay, please pause the video and note down the notes because I'm gonna rough it. So now let's talk about the third one, that is
Now is it visible to you clearly? Okay. So polyesters. So polyesters are made from petroleum products. Okay, petroleum products. कौन कौन से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनता था? Terylene, Dacrons, and terene are polyester fibers. Polyester clothes long lasting water and wrinkle resistant. Okay, so polyesters क्या होते हैं? Polyesters are made from petroleum products, and examples of polyesters are terylene, dacrons, and terene are polyester fibers. Polyesters clothes are कैसे होते हैं? लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, वाटर एंड रिंकल रेजिस्टेंट होते हैं. नाउ this is all about the synthetic fiber polyester. Now let's talk about the properties of the synthetic fiber polyester. So properties. Okay, so this is the heading properties, and write the first point. Write the first point that they are long lasting. कैसे होते हैं? They are long lasting. Then write the second point that they are water and wrinkle resistant. Okay, so they are water and wrinkle resistant. Next point, they are
are strong fibers. Okay. So properties, what are the properties? That they are long lasting, they are water and wrinkle resistant, they are strong fibers. Now this is all about the properties of polyesters. Now let's talk about the uses of this synthetic fiber polyester. So uses, here's our heading. Here you write the first point, that is it is used for manufacturing saris. Okay, they are used for manufacturing saris, dress materials. Okay, dress materials, curtains, and it is used for manufacturing clothes and etc. Then write a point. It is used for making blends with other fibers. For example, terylene, this is why. Okay, this is terylene with cotton gives terracotta. Okay, terylene is blended with cotton and it gives to the formation of a new synthetic fiber, that is terracotta. And when terylene is blended with wool, it gives terry wool. Okay, it gives terry wool, and it is used for making sails for sailboats. It is used for making
conveyor belts. ओके, अब हम लोग इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं. सो इट इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग साड़ीज, ड्रेस मटेरियल्स, curtains, clothes, and polyesters को blend करते हैं with other fibers like cotton and wool, and when it blends with cotton, it gives to the formation of a new synthetic fiber, that is terracotta, and when it blend with wool, it gives to the formation of a new synthetic fiber, that is terry wool. Now it is also used for making sails for sails boats. ये सेल्स बनाने के लिए यूज होते हैं. किसके लिए? सेल बोट्स के लिए. एंड दे आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग कॉन्वेयर बेल्ट्स. ये बेल्ट्स बनाने के लिए भी बहुत यूज होते हैं. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द पॉलिएस्टर्स. फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं. पॉलिएस्टर्स आर made from petroleum products. Terylene, dacrons, terene are polyesters. Terene polyester fibers. पॉलिएस्टर क्लोथ्स आर लॉन्ग लास्टिंग. कैसे होते हैं? लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, वाटर और रिंकल रेजिस्टेंट होते हैं. इसको आप नोट्स लिखते जाइए, आप नोट्स लिखते जाइए. प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होते हैं? दे आर लॉन्ग लास्टिंग, जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन में भी बताया है. दे आर वाटर एंड रिंकल रेजिस्टेंट. दे आर स्ट्रॉन्ग फाइबर. फिर आपको मैंने यूजेस बताया कि इट इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग साड़ीज, dress materials, curtains, clothes, etc. It is used for making blends with other fibers like cotton. When it blends with cotton, it gives to the formation of the new synthetic fiber, that is terracotta. And when it's blend with wool, it gives to a new formation of a new synthetic fiber, that is terry wool. It is used for making sails for sails boats. It is used for making conveyor belts. So this is all about the polyester. Let's talk about the fourth type of synthetic fiber, that is acrylic fiber or acrylon or orion. Okay, so let's talk about that. First of all, you pause the video and start noting this all notes, because these are very much important for you and for your exams. So let me rub this.
Okay, so let's talk about the next and the fourth synthetic fiber, that is acrylic fiber or acrylion or orion. Okay, so acrylic fiber is obtained by the polymerization of molecules of acrylion nitrite, okay, which is a petro petroleum product. Petroleum product. These fibers are very light and soft like wool. They are resistant to weathering. Okay, तो acrylic fibers होते क्या है? Acrylic fiber is obtained by the polymerization of molecules of acrylic nitrite, which is a petroleum product. These fibers are very light and soft like wool. Sorry, यहाँ ये होगा like wool. यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, दैट्स व्हाई इसको रफ कर देते हैं. ओके, सॉफ्ट लाइक वूल होगा यहाँ पर. ओके, लाइक वूल एंड रेजिस्टेंट टू वेदरिंग. थोड़ा गलत हो गया स्पेलिंग, दैट्स व्हाई मैंने रफ कर दिया. So acrylic fiber is obtained by the polymerization of the molecules of the acrylic nitrite, which is a petroleum product. These fibers are very light and soft like wool. They are resistant to weathering. So this is all about our fourth synthetic fiber, that is acrylic. Now let's talk about the properties and uses of this synthetic fiber. Okay,
properties. First, all of you write, they are light, जो कि मैंने आपको डेफिनेशन में भी समझाया. दे आर लाइट, सॉफ्ट, लाइक वूल. इसको आप नोट करते जाइए. दे आर resistant to weathering. They do not shrink. They are long lasting. They are less expensive. तो सारे के सारे सिंथेटिक फाइबर्स की मिली जुली ही, मतलब हल्का हल्का डिफरेंस होगा, सेम ही होते हैं. ओके, क्योंकि दे ऑल आर सिंथेटिक फाइबर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द यूजेस. प्रॉपर्टीज फिर से एक बार बता देता हूँ कि दे आर लाइट, दे आर सॉफ्ट लाइक वूल, दे आर रिंकल रेजिस्टेंट, they are resistant to weathering, they do not shrink, they are long lasting, they are less expensive. Now let's talk about the uses. यूजेस के बारे में डिस्कस करते हैं. तो पहला यूज, they are used for making thread for knit sweaters. ये थ्रेड बनाने में यूज होते हैं फॉर द नेट स्वेटर्स. दे, एक और यूजेस लिखिए. दे also used for making wool. ये वूल जो मैंने लिखा है आपको दिख नहीं रहा होगा, इसलिए इसको यहाँ से रफ कर देते हैं. यहाँ लिखना सही नहीं होगा क्योंकि ये आपको दिख नहीं रहा है. ओके, नाउ सॉरी, वही वाला सेकंड पॉइंट चला था हमारा. तो दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग वूल लाइक blankets and ऐड लिखा गया, blankets and shawls
which are very light and worn. Okay, so these are the uses that they are used for making thread for knit sweaters. They are also used for making wool like blankets, shawls, which are very light and warm. फिर प्रॉपर्टीज को फिर से डिस्कस कर लेते हैं. सी दैट आर लाइट सॉफ्ट लाइक वूल, दे आर resistant to weathering, they do not shrink, they are long lasting, they are less expensive. फिर एक्रेलिक फाइबर के बारे में डिस्कस करते हैं. दैट इज एक्रेलिक फाइबर इज ऑब्टेन्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ acrylic nitrite, which is a petroleum product, and they are very light and soft like wool. They are resistant to weathering, जो कि प्रॉपर्टीज में भी है. सो वीडियो को आप पॉज कीजिए और सारे नोट्स लिख लीजिए. सो इतना ही था हमारे, सॉरी, इतना मैंने आपको पढ़ा दिया है. ओके, अब हम लोग कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी दिखेंगे सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में. फिर मैं क्लास को एंड कर दूंगा एंड देन वी विल study the part 2 of this chapter, that is all about the plastics and kinds of plastic. वो क्लास हमारा रहेगा दूसरा क्लास इस चैप्टर का. तब तक के लिए आप इसका नोट्स बनाइए. देन लेट्स टॉक अबाउट advantages and disadvantages of synthetic fiber. Okay, okay. होप दैट अभी तक आपको सब समझ में आ रहा होगा. तो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस जो होंगे आपके सिंथेटिक फाइबर्स के, वो भी पॉइंट में मैं लिखाऊंगा. उसको भी आपको नोट्स बनाना है बिकॉज दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्स में आएंगे. फर्स्टली लेट्स टॉक अबाउट द advantages of synthetic fiber. Okay, पहला पॉइंट लिखिए आप लोग. पहला पॉइंट है और these fibers have a high luster, they have high luster, okay. आपको ये दिख नहीं रहा होगा. Now, is it visible to you clearly? Okay, high luster and they
do not turn yellow with age। जैसे कोई कुछ कुछ कपड़े जो है पहनते पहनते जो है येलो कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनका कलर जो है चेंज हो जाता है, तो सिंथेटिक फाइबर जल्दी येलो नहीं होते। ओके, तो ये भी एक खूबी है उनके बारे में। देन सेकंड पॉइंट इज they are easy to clean and dry quickly। इसके बारे में एक एक्सपेरिमेंट भी दिया हुआ आपके बुक में, मैं आपको दिखाता हूँ। that take two cloth pieces of the same size, roughly half a meter square, each one of these should be formed। इसमें हम लोग को दो ठो कपड़ा लेना है। आप इस एक्सपेरिमेंट को घर पे भी कर सकते हैं, या फिर मैं इसका वीडियो बना के भी आपको दिखा सकता हूँ। सो ये तो बात की बात है, पहले जो हो रहा है उसको देख लेते हैं। दैट they are easy to wash, easy to clean and dry quickly। they do not they do not shrink they do not shrink on washing। Okay, they do not shrink on washing। Next point is they need very little or no ironing। आप मेरे साथ पॉइंट लिखते जाइए। they last longer as compared to natural fiber। And the last and important point, that they are less expensive as compared to natural fibers। So these are the advantages of the synthetic fiber, that these fiber have a high luster and they do not turn yellow with age। they are easy to clean and dry quickly। they do not shrink on washing। they need very little or no ironing। they are last longer as compared to natural fiber। they are less expensive। So these are the some points which we have also discussed in the properties of the synthetic fibers like rayon, nylon, polyesters and acrylic। But these but apart from that, you have to make notes of this
So pause the video and make the notes of the advantages of synthetic fiber, which I have written here. And let me have this, and then we will discuss the disadvantages of synthetic fiber. So the first point about the disadvantages of the synthetic fiber is and they melt easily to form small sticky beads at a very high temperature. Okay, therefore it is always a risk of getting burns, especially in okay. So जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो जल्दी मेल्ट हो जाते हैं एंड स्टिकी बीड्स फॉर्म कर लेते हैं एट अ हाई टेम्परेचर एंड ये हमेशा रिस्क ये लगा रहता है कि क्योंकि किचन में स्पेशली किचन में जो होता है हाई टेम्परेचर होता है एंड देयरफॉर अगर हम लोग सिंथेटिक फाइबर पहन के सिंथेटिक फाइबर का कपड़ा पहन के चले गए तो अगर वो मेल्ट हो गए तो वो स्किन में चिपक जाएंगे
और स्मॉल स्टिकी बीड्स बना देंगे, जो कि हमारे लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है. So this is the first disadvantages of synthetic fiber. Second, absorb sweat, therefore clothes made from synthetic fiber are very uncomfortable in summer or rainy season. They get electrically charged in dry weather. This electric charge causes skin problems in some persons. They are non-biodegradable and hence cause pollution. So these are the disadvantages of synthetic fiber. First, I have discussed that they melt easily to form small sticky beads at a very high temperature, and therefore it always a risk of getting burns, especially in kitchen. And the second point is they cannot absorb sweat, and therefore clothes made from synthetic fiber are very uncomfortable in summer or rainy season. जो कपड़े बनाए जाते हैं सिंथेटिक फाइबर से वो स्वेट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, तो इसी के लिए ये जो फाइबर है सिंथेटिक फाइबर से बना हुआ क्लोथ वो वेरी अनकंफर्टेबल बन जाता है समर और रेनी सीजन में. दे गेट इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड इन ड्राई वेदर. दिस इलेक्ट्रिक चार्ज कॉजेज स्किन प्रॉब्लम्स इन सम पर्सन्स. तो कुछ कुछ पर्सन्स का जो स्किन है बहुत सेंसिटिव होता है, और ये जो सिंथेटिक फाइबर से बने कपड़े होते हैं ये इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं ड्राई वेदर में, एंड जिसका स्किन सेंसिटिव होता है वो उसके स्किन में स्किन प्रॉब्लम्स कॉज कर सकते हैं. एंड दीज आर नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड हेल्थ कॉज पॉल्यूशन. ये क्या है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है और इसलिए ये पॉल्यूशन फैलाते हैं. So this is all about the synthetic fibers. In our next upcoming live class,
we will discuss about the part second of our chapter, that is all about the plastics. Okay, hope that you have understood everything that has been taught in this class. And thank you for being with me in this class. And if you find something you know earlier, so please like the this video. And if you have get something new knowledge from this live class, please subscribe and stay tuned with my channel for more these types of live classes. For now, thank you, and we will again meet our next class. Thank you. And please note down all the notes that I have given in this video. Okay, thank you. Hope that you have enjoyed this live class.